और भाई सब जाएं हाफिज कदीर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और शुरुआत हर किसी की इसी तरह से होती है और ये बना रहे हैं व्लॉग, तो इनको जाके देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज ह्यूस्टन में एक बहुत बड़ी इफ्तारी का प्रोग्राम है। यहाँ पे तारीख़ में पहली दफ़ा बिल्कुल ओपनली लाइव स्क्रीनिंग लगा के मक्का जो है उसकी स्ट्रीमिंग है और मुसलमान पहली दफ़ा यहाँ पे जमा होके इफ्तारी का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम भी आए हैं और चले साथ साथ आपको दिखाते हैं कि कैसा इंतज़ाम किया है इन्होंने। ये शुगरलैंड का टाउन स्क्वायर एरिया है, डाउनटाउन कहते हैं, टाउन स्क्वायर कहते हैं। तो आपको साथ साथ दिखाता हूँ मैं। माशाल्लाह जी स्क्रीन लगी हुई है लाइव मक्का। साथ साथ स्टॉल्स भी हैं। Jewelry style, ladies dresses, हलाल फूड है जी। परफ्यूम्स भी हैं। And welcome to the first Houston's Sugarland Iftar. This is our first time we're doing something like this. If we're making any mistakes, I apologize. Just like us, just like you, we're all volunteers over here. So the focus was, we've done a lot of events in this venue. The beauty of this venue, I'm actually going to speak in English because we have a lot of non-basic people here too. They speak Urdu, they speak Farsi, they speak, we have folks here from Iraq, Iran, Lebanon, Arabic. So we have a very diversified crowd. And the beauty of this venue is we have the majority and the minorities. I think this is the only beautiful diversity and celebrate Ramadan. So thank you to the Sugarland Town Center, the city of Sugarland, for making this happen. That I want to celebrate Ramadan in Sugarland without the aspect of any politics, without the aspect of any controversy, without any leadership, because I can openly say, with my American friends, Christian friends, Hindu friends, this is an invitation to everyone of religion from the Muslim community to come open the fast with us. This is not limited to the Muslims, but it's an invitation from all the Muslim community to any and every religion, any and every race, to come and celebrate this beauty of the holy month of Ramadan with us. And I think it's such a beautiful feeling because I can see the kids, the families, they have their cameras right at the Makkah. This is the first time in history of Sugarland that we have live azan and live transmission directly from Makkah and Medina. Is that a beautiful feeling, ladies and gentlemen? Yes. And with that said,
We have a variety of different food vendors tonight who are putting together and volunteering. The first one is going to be one of the most authentic Pakistani tastes. They're called Karahi Boys. So the folks, that's the booth of Karahi Boys right here. If you want Pakistani food, the biryanis and the traditional Pakistani recipe, Karahi Boy is right there. Remember, all the food is absolutely free. Right next to Karahi Boys, we have one of the best Mediterranean restaurant. It's called La Pasha. So thank you very much to the La Pasha management for bringing some good Mediterranean food. Then we've got one of the Indian food vendor. They're called Desi District, and they've got some halal biryani over here. So thank you very much for joining us on this great Muslim Ramadan fest. And right there we have, I think, Kadak Chai, Kashmiri Chai, Ruh Afza, patties, and a lot more from the folks at Chai Chai. So enjoy the food, enjoy Ramadan, enjoy the legacy of first Sugarland Iftar. And one person that I want to give this entire credit to, I mean not 90%, not 95%, but 100% is to the one and only Dr. Yasmin Qureshi. You know, she's one of those physicians that recently is in the volunteering to go to Gaza, you know, and we have stopped her here to be serving the community. So lots of respect and lots of love to you, Dr. Yasmin. And with that said, you know, whenever so far we've had any type of Ramadan gatherings, there's been controversies, there's been, you know, people talking about different aspects of the religion. But I openly, you know, you can have your cameras on, I openly want to say to the humanity and to the community that tonight we are dedicating this to all those people who are suffering in this world, who are losing their life. Pray for them. Does not matter which country it is, which religion it is, which minority it is, but it is for the humanity. Because I always say, humanity is community, and this is the diversity that we are all showing here. Can we all have prayers tonight when you are opening your Ramadan for the people of Gaza? And I want to repeat, for the people of Gaza. Are you with me, everyone? Yes. Thank you very much, and once again, let's open our Ramadan Sugarland Fest 2025 with the beauty of Islam, Ramadan, and having all our families together. Inshallah, in few minutes, we're going to have the live azan from here. So the Qibla is going to be directing this way. So the women are going to be following all the men. And this is the direction for the Qibla, correct? A toy. And does not matter, it can be a $2 toy, it could be a $5 toy. But we will be giving we're doing a Eid toy drive. And I'm very proud to say a lot of people have brought toys today, but through our Eid toy campaign, that's through Yasmin Qureshi's Eid toy campaign, we have collected about 1,100 toys. And we're going to be giving these toys to bring smile to not only the refugee children, but also the underprivileged children. And it does not matter what religion they belong to, because a toy is a toy and it's to bring a smile on a child's face. So let's bring smile. Every walks of life, different countries, different religion, and we wanted them to be a part of it and celebrate Ramadan Iftar with us. That to me, and I hope that this becomes a tradition
of an annual iftar every year right here at the Sugarland Town Center. Today, you guys are a part of something that, and you are a part of a iftar transmission where our children, the youth, the students, because I always say the youth is the root of our community, and mashallah today when we're opening our fast, मैं आपको दिखाता हूँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हमारे देखिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज देखें जी मेरे आइडियल है चांडियो भाई से मुलाकात हो गई, दूसरी दफ़ा हो गई, तो ये अब थोड़ा सा बात करेंगे। आप बताएं कि आप जो भी यहाँ देखो आज देसियों की एक तकरीब है और पहली बार कोई अजान आएगी यहाँ शुगरलैंड में, उसको सुनने आए। हमने भी सुना है कि कैसे होता है, मेरे ख्याल ये टीवी से ही करेंगे सब कुछ, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी इंजॉय करो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चांडियो भाई। और भाई सब जाएं हाफिज़ कदीर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और शुरुआत हर किसी की इसी तरह से होती है और ये बना रहे हैं व्लॉग, तो इनको जाके देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। At one of the booths, then don't go to Karahi Boys. If there is nothing at Karahi Boys, go to Desi District, then go to Chai Shai. We have enough food for everyone, but maybe the variety of one vendor might finish. Good Iftar 2025, Sugarland Town Center, history making tonight. Thank you. थोड़ा सा टाइम रह गया और मैं आपको लाइव चल रही है। बहुत लोग आए हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी आए हैं। हमारी मुलाकात इम्तियाज़ चांडियो भाई से हो गई आज दोबारा, एक दिन पहले भी हुई थी, वो भी अपना ब्लॉग बना रहे हैं। इन्होंने अनाउंस किया ईद की नमाज भी यहाँ पे इंशाल्लाह मोर देन 4000 मुस्लिम जो है वो अदा करेंगे सेम स्टेज पे। 10-12 मिनट रह गए अफ्तारी में। दिखाई भी जो बेनज़र भी जो आ रहा, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा Jazakumullah khair. My name is Omar Zaman. Keep me in prayer. Assalamu alaikum. Let's start it. Ya Allah, don't deprive me from beholding your beauty. Oh, my Lord, accept this plea. Zafran, can you bring mic 1 to the stage, Zafran? 700 events across the globe, but none of those events gave me the peace that this event is giving me. And inshallah, until I have this life, I will try my level best to do this iftar every year at the Sugarland Town Center with the beauty of all these beautiful people. So thank you, Houston, and please give it a big hand for each and every one of you, because without you, this is nowhere. So thank you. कितना वक्त बाकी है, गला भी खुश्क हो गया है, 1 मिनट बाकी है। देखें 1 मिनट, एक कीमती मिनट बाकी है। और ये देखिए आज हम सब अजान की आवाज़ और माशाल्लाह मक्का ऑन द बैकग्राउंड,
Open air, Sugarland Town Center. What a beautiful, it's such a beautiful feeling. You have to stop. Bismillahirrahmanirrahim. You can read this dua. पानी खोलो, पानी खोल के दो बेटा। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة اللهم ربنا لا تسلمنا في الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه أجمعين. जी अभी हम जो है वो फ्री हो गए यहाँ से। बहुत अच्छा रहा, पहली दफ़ा यहाँ पे अफ्तारी थी ओपन एयर। यहाँ पे मुस्लिम जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमान जमा हुए थे, अफ्तारी हुई है और पहली दफ़ा अज़ान हुई है माइक के ऊपर। नॉर्मली यहाँ होती नहीं है, मस्जिदों में ये नहीं होती है। और उसके बाद बॉक्सेस थे, खाना था, अफ्तारी हो गई। उसके बाद चाय के स्टॉल थे, चाय हो गई और अभी जो है ये सारे लोग निकल रहे हैं, हम भी निकल रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बराए मेहरबानी जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।